हाय गाइस, आज हम बात करेंगे कैनरा बैंक के बारे में कि कैनरा बैंक कैसा है अभी, व्हाट इज़ द टाइम, अभी हम क्या कर सकते हैं। और जो लोग कैनरा बैंक का स्टॉक लिए हुए हैं उनके लिए क्या है, और जिनको लेना है वो अपना ये वीडियो देखें और समझें कि व्हाट आर द थिंग्स, कैनरा बैंक कैसा वैल्यूएशन है, कैसा बैंक है नॉट। तो अगर देखा जाए तो कैनरा बैंक स्टार्टेड इन लॉन्ग बैक। कैनरा बैंक बहुत पुरानी बैंक है इंडिया की। 1906 में नेशनलाइज हुई थी, 1969 में। 13 मेजर बैंक है इंडिया की। अगर बैंक के बारे में और देखें तो बैंक का लॉस ऑफ सब्सिडी एंड अगर कैनरा बैंक का हम ये देखें कि व्हाट आर द सब्सिडी, तो दीज आर द सब्सिडी लाइक कैनरा बैंक फाइनेंस है, होम फाइनेंस है, इंश्योरेंस है, सिक्योरिटीज़ है एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। एंड दीज आर द बुक एक्सपोजर्स कि कहाँ का बैंक का पैसा लगा है। ब्रांचेस 9,604 ब्रांच है, बिकॉज इट्स सो ओल्ड बैंक, सो ब्रांचेस भी बहुत ज़्यादा। रूरल में भी अच्छा पेनिट्रेशन है इन बैंक का। एंड मार्केट शेयर 6.2 है बैंक का। अगर हम यहाँ देखें बैंक का तो 94,000 करोड़ का अराउंड मार्केट कैप है, वेयर इट इज हैज द लोएस्ट पी रेशियो। अगर इफ यू सी द 5.91 इज हार्डली एनी पी रेशियो। एंड आर ओ सी इज गुड, ई पी एस इज 17.6। तो पहले हम देखेंगे ई पी एस में ग्रोथ है कि नहीं। तो ई पी एस का ग्रोथ अगर देखना है तो वी कैन सी दैट कि अगर हम यहाँ जाएंगे तो फ्रॉम 12 टू 16 दे ओनली इन दिस ईयर दे वाज अ डी ग्रोथ 2020 में। रेस्ट ई पी एस हैज़ बिकम लाइक 17 एंड 6 से 17 है, देर इज अ ग्रोथ इन द ई पी एस विद द प्रॉफिट 2000 से 16,000 करोड़ है। तो फ्रॉम ये 2020 के बाद बैंक का अच्छा ग्रोथ आया है प्रॉफिट में, विद 70,000 करोड़, 50,000 करोड़ का रेवेन्यू से डबल कर लिया फिर मतलब 25% के हिसाब से रेवेन्यू का ग्रोथ दिख रहा है बैंक का। हियर यू सी द ग्रोथ इन 5 years of the sale is 18% with 91% the profit growth. Not bad, it's very good. And in 1 year the stock is given a return of 34%, in 5 years 21%. बिकॉज बैंकिंग है तो बैंकिंग का यही रिटर्न रहेगा स्टॉक का। बहुत बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं हो सकता, बिकॉज देर इज नो फ्लक्चुएशन विद देर इज हार्डली यू फाइंड एनी काइंड ऑफ रिस्क। where equity return on equity is very good, 17.9 is very stable equity. And book value एक अब क्या है ना, बैंक इज इन द बिग बुक वैल्यू। बैंक अपने बुक वैल्यू पे ही अभी करंट है। सो इट लुक लाइक इट्स सो अंडर वैल्यू। इफ़ यू सी बैंक अपने बुक वैल्यू पे ही है, अराउंड 104 102 पे चल रहा है बैंक। सो जो बैंक का बैलेंस शीट में बुक वैल्यू सेम है मार्केट वैल्यू, इट्स क्वाइट वेरी अंडर वैल्यू स्टॉक। अगर यहाँ देखें तो प्राइस टू अर्निंग इज कम, बुक वैल्यू एंड द डिविडेंड यील्ड। बैंक का 3.13% एवरी ईयर डिविडेंड देता है बैंक। एंड सपोज यू आप 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो 31,300 रुपीज़ यू विल गेट डिविडेंड। एंड बैंक इज 1,13,000 का वर्किंग कैपिटल है, वेयर बैंक इज बिलो द वर्किंग कैपिटल मार्केट कैप, तो इट्स वेरी अंडर वैल्यूड। अगर हम बैंक का ग्राफ देखें तो 1 साल का ये है ग्राफ, 5 years। एंड अब इसका वैल्यूएशन अगर देखें तो हम पी रेशियो देखते हैं पहले। क्योंकि 2020 में लॉस पे था बैंक, तो हम तो हम 3 साल का पी रेशियो देखते हैं। तो द पी रेशियो ऑफ द बैंक है डिक्रीज फ्रॉम 7 to 4। फिर अभी 16 से पी। बट इफ़ यू सी द ई पी एस इज 12। अभी जैसे यहाँ पे ई पी एस 17 है, पी 5। मीन्स बैंक का अर्निंग्स बढ़ रहा है लेकिन दाम नहीं बढ़ रहा है शेयर का, बिकॉज दाम बढ़ जाता है तो फिर इसका वो रहता नहीं जगह दाम बढ़ने का। तो दाम बढ़ने का भी चांसेस है बैंक में। एंटरप्राइजेस एबिडा में 17 टू इट हैज रिड्यूस टू 30, अगेन इट इज़ वेरी गुड साइन कि बैंक का वैल्यूएशन लो है। एंड एंड देन वी कैन सी बैंक का फिर अदर बैंक, लाइक बैंक का जो आर ओ ई है 17 है। बैंक ऑफ बड़ौदा, एस बी आई के बाद सबसे ज़्यादा इस एस बी आई एंड देन कैनरा बैंक का सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी है, सबसे ज़्यादा ये अपने पैसे पे पैसा कमा रही है, जो भी पैसा बैंक ने लगाया। वैल्यूएशन का जो मीडियन है, जो एवरेज है 15.73 है। ऑपरेटिंग इनकम टू अबिडा एंड वेयर इज 13, मतलब बिलो द वैल्यूएशन है। अगर आप बिलो द वैल्यूएशन देखा जाए तो व्हाट इज द करंट
तो 13.30 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे विद 104 डिवाइडेड बाय 15.73, अराउंड 15.73 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 13.30, अराउंड 123 रुपीज़ का वैल्यूएशन आ रहा है एज पर द इंटरप्राइजेज वैल्यू टू ऑपरेटिंग इनकम टू एबिटा। अगर हम बैंक का ये ये 62% है, there is a growth in 3 years return 30%, 33%, and profit has been growth, all aspect there is a growth in this bank। अगर यहाँ पे देखें तो क्वार्टर अर्निंग्स में भी बैंक ने ग्रो किया 30,000 करोड़, where last quarter was 29, then 29, 28, so there is a growth in the quarter earning, where there is a growth in the profit before tax is 5,500, the maximum they are given a profit in this quarter। And if you see the net NPA, it is also been reduced here in this quarter, last quarter, and already shared with the segment wide report. And revenue, if you see, there is a good growth in the revenue from this 1,17,000, and there is expenditure, interest is also increased, and other income has also been increased to 30,000 crore. 20,000 is from 3,000 to 20,000, 14, 20, 20 is profit before tax, and the 16,000 is the profit. Here you will see the compound is 18%, 91% the profit, 21% the in 5 years are given a return, and equity is return on equity is 11%। हम अगर इसका देखें कि प्रमोटर्स हुआ था, और प्रोमोटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कंट्रोलिंग 62.93% of this company bank, FI have increased, and then DI also the same had been reduced, but nothing to be worried for that. So this is the bank, and then if you see the return of the bank in one day, like okay, positive, 5th day is positive, 1 month is negative, because the PSU is not doing well, the index, that is the only reason they are dragging down the, ये drag कर रहा है, इसको गिरा रहा है। In YTD the return is 17%, in 1 year return 28%, 28% was the return till, there was a return of 44% till November 2023, last 6 months, and from 20 from this high, from May it is decreasing to 12% is the degrowth. Okay, in 5 years return is 152%. So if you see the PE also, dividend is also good, and I'll just share you a little bit about like who all have given like what are the price. So currently is 104 price, 29 October, where the target is 125. There is a 20%, there is a chances there is the price going to be increasing. And here for the July again the target is 130, and at that time the stock price was uh, around 90 something, like something like that. So these are the outlook for Canara Bank. If you see the technical aspect of Canara Bank, if you see, अगर हम देखें तो Canara Bank अगर it is in upward trend, but I just show you कि in case Canara Bank have to perform, he have to cross at least 105, this Canara Bank अगर इसको क्रॉस करता है 105, मतलब 1.5% यहाँ से कैनरा बैंक अगर उठता है, तो कैनरा यू कैन सी द नेक्स्ट मूव ऑफ कैनरा बैंक गिविंग एट लीस्ट 12% रिटर्न, at least 115, this if you see this line, 8.87% return, I believe 113 easily will able to achieve Canada Bank if you compare with the uh, Nifty. So last 1 year with the Canara Bank, so see Nifty is given a return from here, but because the Nifty is going down, it is reflecting in the Canara Bank stock. Nifty गिरने से Canara Bank को pull down कर रहा है, and if you see the PSU PSU sector, because ये sector भी perform नहीं कर रहा है, that is the only reason. If you see the sector from here, both have performed well, लेकिन यहाँ से ये सेक्टर भी डाउनफॉल किया है फ्रॉम 73 टू 52, सेम ड्रैग टू द कैनरा बैंक। तो अगर हम कैनरा बैंक का स्टॉक को हटा के सिर्फ सेक्टर को देखें, पीएसयू
ओके सो द पीएसयू का अगर हम सेक्टर देखें तो अगर यहाँ से बिकॉज इट इज़ अगर हम ट्रेंड लाइन देखें पीएसयू का सो दिस इज ए सपोर्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी अ रेसिस्टेंस। तो अगर यहाँ से एटलीस्ट 1% अगर ये इस लाइन को इंटरसेक्ट करता है 20,120 को, so there are the major chances कि Canara Bank का stock will go, you will see a 8-9% of return in the Canara Bank. You see the Nifty, the same applicable at least this line. Already it has crossed this line, okay. Yeah, now they have reached here because अभी last week से there is a if you see the growth in the is a 5% is a growth in the PSU index। तो अगर ये इंडेक्स अभी 1.5% और ग्रोथ करेगा ऊपर जाएगा तो दे इज अ चांस कि कैनरा बैंक का स्टॉक पे दे विल बी अ बिग 8% ग्रोथ आई एम लुकिंग फॉर। तो एंड इफ़ यू सी वन डे चार्ट कैनरा बैंक बिकॉज अगर आप देखो तो सुबह से यहाँ तक कैनरा बैंक उठा है लेकिन क्योंकि मार्केट ड्रैग डाउन हुआ आज इसलिए कैनरा बैंक गिरा। 5 days इन अ मंथ अगेन इज द सेम, कुछ नहीं हुआ ये इन 3 months। तो अगर देखा जाए तो अगर ये इसको क्रॉस करता है यहाँ पे मतलब 105 के ऊपर जाता है तो anybody can invest and they have to do their own research, but for me like it is the right time to get into this stock for actually for 8% return। well thank you so much watching this video। I hope you're able to understand कि कैनरा बैंक में भी क्या चल रहा है। फंडामेंटल्स आर टू स्ट्रॉन्ग, कैनरा बैंक का फंडामेंटल्स का कोई इश्यूज नहीं है। एंड 125 130 सी 125 130 का टारगेट्स बोल रहे हैं लेकिन फॉर मी लाइक आई एम नॉट टेलिंग 125 130 बिकॉज इफ यू टेक 125 it's more than 20%, but practically I just see it's like 8%। well thank you for your time for watching this video, thank you so much।